Hello, everybody. Welcome back to another session. Today, we are going to explore how to do installation for Cygwin. Now, many of you may be wondering, what is Cygwin? Cygwin, we actually are going to install the Cygwin toolkit for C++ and C programming. Rather, we can actually have support for multiple languages. Cygwin gives you an environment which behaves like Unix under Windows. So it's like Unix-like environment. So if you do not want to have your machine to be dual boot and you want to have Unix-like environment where you can test all the Unix commands, think about Cygwin. So let us first go to Cygwin site to understand what exactly the Cygwin is all about. So let me take you to Cygwin and to understand what Cygwin is. It's a GNU project, so you don't have to pay for it. So if I say Cygwin, Cygwin, so if you come to the Cygwin, it will take you over here. It kya keh raha hai? But let's understand. कहता है a large collection of GNU and open source tools which provide functionality similar to Linux distribution on Windows. So it is like Linux under Windows. Correct? So what Cygwin is not a way to run native Linux app in Windows? No. You must rebuild the application from source if you want to run it on Windows. So it is not a native Linux apps on Windows. It's not. That means something which is built only for Linux. Will it run on Windows if I have Cygwin? No. Cygwin only gives you environment where it is looking and feeling like Linux. Linux nahi hai. Correct? A DLL provides substantial POSIX API functionality. That means it is not promising that every function that is available in Linux will work over here. Most of the functionalities which are available in Linux will run over here. A magical way to make Windows apps aware of Linux functionality like, again, no. So there are some features of Linux OS जो आपको Linux machine पे मिलेंगे. But for most of the time, whatever the common operation that we perform in Linux, that kind of operations we can perform on using Cygwin on Windows itself. So क्या कहता है? This statement is very important. Get the Linux feeling on Windows. So you'll get the feel as if you're working on Linux, actually working on Windows, but the interface will appear as if it is Linux. Correct? So on my machine, if you look at, I have this Cygwin. See. Yeah, I have this Cygwin terminal. So when I start, it behaves as if it's Linux. LX minus L, it behave as if Linux. Suppose if I say CD, D drive, and then I say ls minus L, it's giving you output as if it's working on, as if you're working on Linux operating system. वैसे ही Linux में जैसे output आता है, likewise it has generated all the output. Okay, so the file is suppose cpp.cpp, तो ये कह रहा है कौन सी फाइल है, ओनर कौन है, ग्रुप कौन सा फाइल की साइज क्या है, all that thing it is listing. Okay, it is giving you all the things. Okay, the file name is suppose a listing visual. Let's do it once again. Now that here we go, अब सही दिखाएगा. तो फाइल नेम is suppose warranty.xps 2015 की फाइल है. Correct? A workgroup है, unknown user है. What is the type of the file? All the details have been a Linux like है. Under Windows, this is not what would happen. If you're working under Windows and if you're on D drive, it has said list, it would give you the result in a completely different way. So let us start with the terminal. So अगर Linux Windows terminal पे है and you are in D drive, to get the similar listing, where I said sir नहीं हुआ dir, you got this kind of listing. Same files, word count.java, win.txt, same thing. Okay, event.txt, all those things, but the interface is totally different. Now, what we do is, in this course, I have been using NetBeans, and along with NetBeans, I have been using Cygwin because NetBeans supports multiple compilers, and one of the compiler which is very near to the GCC standard, the standard committee is a GCC compiler. So Cygwin gives you an opportunity to install the C compilers as well. So going back over here, you'll realize it provides a lot of tools for developers. It provides a lot of tools. So if you have to install it, first thing that you'll have to do is you'll have to download this particular file. It's a very small file. Okay. You can update an existing installation if you want to. You can start from scratch. Okay.
After you install this particular file, rest of things will happen automatically. Our friend Sanjay has tried doing it. It's not working. So what I'll do is I'll take access of his machine and do the setup on his machine rather than doing it on my machine, because my machine already has Cygwin installed. मेरे machine पे already Cygwin installed है. So I do not want to waste or even disturb this installation, which is working just fine for me for years. Okay, so let's have access about his machine and try and have an access to it. So what I'm going to do is I'm going to give Sanjay rights as a co-host. Sanjay, please provide Zoom, share your screen and provide me access to your system. And Sanjay, hold on, don't do anything. I'll do it. Don't do anything, just leave. I have asked you for remote control. Give me the request. I request you for remote. Okay. Now look, Sanjay is trying to install Apache as well, and he has Cygwin. I hope Sanjay, आपने try नहीं किया install करना या किया है try? Sanjay, have you tried or have you not tried? Am I audible, everybody? Yes, sir. Sanjay, have you tried or have you not tried? सर ते co-host केलं ना ते share screen केल्यावर speaker on करायचं लवकर बटन येत नाही त्यामुळे ते सर म्यूट होते सर सॉरी हेलो सर हेलो हेलो Okay, Sanjay, have you tried installing it earlier or have you not tried installing earlier? सर ट्राई किया था बाद में अनइंस्टॉल किया वो. Okay, now if you have tried, there are possibilities things can go wrong. So what I'll do is I'll first clean Sanjay's machine. So please check as to how do I go ahead cleaning Sanjay's machine. Sanjay says he has deleted it. Let's cross check whether he has correctly deleted it or not. So we go to program files and check यहाँ कहीं Cygwin है क्या. Looks like he has correctly cleaned it, but I'm still not sure. So I'll do one check. How do I do that? आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. While you're trying to install, I hope I'm audible, everybody. Yes, sir. Okay. Sometimes it so happens that our installation fails. With Cygwin, it is very necessary that you do clean uninstallation अगर वो halfway through हुआ है तो. So there is one command called as regedit. That means we are going to edit our registry. And we'll check if are there any traces of the previous installation. So we are checking now कि इसके machine में कहीं previously installed Cygwin के कोई traces है क्या. तो I go to edit. Sanjay, give me the control once again. And please don't do anything, just hold on. Yeah. It's not working. Sanjay, click on edit. Go to find. Okay, type Cygwin and say, okay, let me say find next. Copy culture, find next. Now, if you find Cygwin somewhere on C drive, that means वो installation clean नहीं हुआ है. If you don't find somewhere on C drive, that means he has uninstalled it correctly.
संजय cancel करो. Okay, he has not found it for so long, so possibly his installation process is perfect. Okay. स्क्रीन एक्सेस नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो गया. डबल क्लिक. Okay, close करो ये, erase it. I'll tell you, you do it. Okay. So close this as well. Show me where have you stored the files. Cygwin. Okay. Now, one thing you should always do is never store all your softwares and things or large files on C drive. तो आपने C drive के desktop पे रखा है. That's a big crime. तो पहले desktop पे जाइएगा. हाँ, hold on. Right click on the software. C software collection पे right click कीजिएगा. Cut कीजिएगा. और आपके मशीन में D drive कहीं और रख दीजिएगा इसे. रख दो. Paste. Do the same thing for the other softwares that I could see over there. Python software. And what is it? Other folder that I see over there? ये कौन सा है पहला? first. अच्छा ये शिफ्ट हो रहा है. ये हो रहा है शिफ्ट ना? Okay, so first thing, don't keep such kind of softwares on C drive. Don't keep any of your ये क्या है नीचे DLLs, क्या कचरा है यार C drive पे. इतना नहीं. बाकी all your examples that you're downloading after the course by lecture, ये सारे examples किसी और folder में रख दीजिएगा later. Okay. सर ये नेटबिन भी कहाँ है वो? Apache 15 भी डाउनलोड करके रखा तो है. वो भी निकालो वहां से. और I'll be trying Apache 15 for the first time. It's latest, so even I don't know. So it will be a learning for all of us, especially जो जावा भी इंस्टॉल करें. आपके मशीन में जेडीके इंस्टॉल हुआ है क्या? जेडीके आपने बोला तो कुछ मत करो अभी. Okay, then do one thing. Okay, while this is being moved, start with the browser. ब्राउजर. Google Chrome. Anything will do. Okay, type OpenJDK. OpenJDK 17. Okay, click on OpenJDK. Okay, so once you come here, so we can download this. So download and install latest OpenJDK software. Yes, do that. Hold on. Let me see. Hold on. Download and install था. Go back. Scroll up slightly. Up. Okay, hold on. Download and install OpenJDK software. Available at, click on the jdk.java.net/19. Click on that. Okay. Now, when you come over here, hold on. Click on this Windows 64 zip file. Yes. Click किया. Yes. तो it has started downloading. Below देखो 32 seconds में download हो जाएगा. Move this again to your
Java software collection on D drive. पहले होने दो download. इसे हो जाने दो complete. नहीं browser open रखो. 17 seconds में होने के बाद इसे move करेंगे. Before that API documentation है क्या इसका free में? We also need documentation. ये करो API Java doc पे click करो. Documentation API Java doc. API dot डॉक्यूमेंटेशन बुलेट बिल्ड्स के ऊपर. हाँ नीचे 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 थर्ड. हाँ क्लिक करो. दैट्स ओपनिंग द डॉक. हमें डाउनलोड करना है. बैक. ओके दिस इज ओपन जेडीके. नाउ अगेन डू google.com करे. हाँ यहाँ टाइप कीजिएगा ओरेकल जेडीके. 2 जेडीके रखते हैं हम लोग. फ्री वाला भी रखेंगे ओरेकल भी रखेंगे. ओके ओरेकल जेडीके. ओरेकल डाउनलोड ये ऊपर. जो हाँ यस. ना होल्ड 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 होल्ड. स्क्रॉल करो नीचे. Okay, so we have this RPM, AMD. Click on Windows Windows. and go to 64 installer. Second. So we have 2 options to install Oracle. Either going for free one or going for this SE. This is also जब तक आप non-commercial purpose के लिए use करें, you can use this as well. So click on that. Have you done it? Okay. Now go to the location. नीचे open JDK ना. Just click on right side. हाँ उसके ऊपर ऊपर. Okay. हाँ open the folder. Open the folder. नहीं ये close करो. Close करो. Open the folder. अरे नहीं 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 यार. हाँ यहाँ open और नीचे show in folder. इसे भी डाउनलोड से उठाओ and keep in the other drive. डिलीट करो यहाँ से. कट. और आपके डी ड्राइव में जहाँ सॉफ्टवेयर थे हाँ डालो डालो सॉफ्टवेयर में डाल दिया. Okay. ये भी डाउनलोड हुआ है. That also you can take. But करो इस पे डबल क्लिक. JDK 19. So you could install Apache, the Open JDK as well as Oracle. Anyone. Don't install both. But I just showed you there are 2 options which are available. Next. Next. Don't change any path. Looks like your machine is working very fast. नवीन घेतली का machine जे? नाही जुनीच आहे. RAM किती आहे? रॅम 16. So it's working faster. Now listen, Apache, okay, it's doing very fast. Okay, let me tell you about the NetBeans. Here Apache NetBeans पण ह्याच folder मध्ये copy करा. Copy that Apache NetBeans 15 that you have downloaded in the same folder, Java software में. हाँ रहने दो, वहाँ रहने तो चलेगा. Let it be there. वहाँ रहने दो. Okay. Show me नीचे वो installation click करो. Yes. So click on next step. Next step. Okay. Now click on the first tab. फर्स्ट टॅब. हाँ ऊपर टैब पहला है. 2 टैब है ना. होम वाला है ऊपर वाला टैब. अरे ऊपर सबसे ऊपर. हाँ होम ना सबसे ऊपर. ये अरे टैब रे. ब्राउजर का टैब. फर्स्ट सेकंड. ये ओके. एक ही है. उसके ऊपर. ये का इसके भी ऊपर. हाँ लेफ्ट में लेफ्ट. हाँ वही एक ही चाहिए था. 2 2 3 3 ओपन नहीं करने थे मुझे. ओके नाउ यहाँ नीचे स्क्रॉल करो. होल्ड ऑन. आराम से यार. स्क्रॉल अप. लैंग्वेज लाइब्रेरीज. होल्ड ऑन. API documentation. Click on API documentation. Specification.
क्लिक बैक, हमें डाउनलोड करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं है. स्क्रॉल अप 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 अप. ओके, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ऑन द लेफ्ट साइड, होम के नीचे. होम के नीचे बैक, गाइड्स. ओके, डाउन 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 डाउन. करो 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 करो. डाउन, ऊपर. क्लिक ऑन दैट व्यू. व्यू पे क्लिक करो. आपने क्लिक किया कि मैंने क्लिक किया? आप हाँ आप कर रहे हैं. Okay, let me just try. I plan to download the Java doc. Uh, it's still taking us to Java doc tool. We want to download the Java doc guide. So it's taking us to only the Java doc tool. हमें Java का documentation चाहिए. So where do I download it from? Sometimes I also don't recollect. Health center, here I'll type. I will go to Java SE. Maybe Java 17. This is what we want to download actually. So where has it disappeared? Java SE technical documentation. Download the JDK.
what happens at times is in new versions, they may just stop providing the docs, means downloadable. That's a possibility, but I don't think so. It has happened so early. Java development kit hai. Okay, let's keep this thing aside. अपना Java आ गया, documentation बाद में देखते हैं. Now that he has installed Java, let's proceed further. Let's install here. Let's close this. Next step. Yeah, Nahin, close. Close. Okay, let me do it. Okay. I'll leave it. Now that he has installed it, the next thing that we should really focus on is to have the Apache software being installed. But before that, we need to install Java. So let's check whether he has installed Java on his machine or not. So let's go to CMD. And for Java, for NetBeans to be installed, it needs Java. So we'll just see whether we have Java. He already has installed Java on his machine. So let's see what version of Java has he installed. How do I check the version of Java that he has already installed? Java. Let me check Java minus version. So if I say Java minus version, yeah, Java minus version, let's check minus version. ये कहता है could not receive fatal exception has occurred. Java minus, let us type it once again and see what's going wrong. I say Java minus version. Okay, Java 19 he has already installed. So there is nothing that we are supposed to do. He has already installed Java 19, the latest version of Java. So I say Java minus version and Cygwin, small case में चाहिए था. So I said Java minus version, we got the installation. So he already has Java installed. So for those who are installing NetBeans, first prerequisite is Java चाहिए. Now we will try and install Apache NetBeans. Now Apache NetBeans is an IDE that will provide you support for multiple languages. He wants support for Java, so Java is already there in his machine. He also wants support for C++. So let's first see whether Java के लिए है क्या support. ये install हो रहा है क्या Apache 15. Let's check it out. So it's हो रहा है install. I'm also installing it for the first time. On my machine, I think I have 12 or 13. Here we go. And here I'll go to customize. Now, when I go to customize, I'll have an option of selecting what are things I would like to have. So I'll rather use customize rather than just the base ID, Java SE, Java EE, HTML, PHP. ये तो चाहिए. That will take around 700 MB का space. So I'm trying to click on customize. Here I go, customize. I don't want PHP, so I'll remove it. Unselect करो, PHP को unselect करो. Okay, and then click on OK. Say next. I accept. Next. Look at this. Hold on. When you come here, don't change this path. Let this path be the default path what it takes, and then say next. Karo next. 1 minute. Check for updates. Yes. Okay. Check install. Here we go. So दो चीजें हो गए. Java डाउनलोड हो गया था. He has already installed. नहीं होता तो हम लोग JDK के क्लिक करके we could install JDK as well. But since he already has it, we don't have to bother. Otherwise, the one that we have downloaded, we could have just double clicked and installed JDK as well on the machine. Meanwhile, we also check whether इसके अंदर JDK है या JRE है सिर्फ. He may have probably installed only JRE. So go to command prompt once again जब तक installation हो रहा है. And type Java W. Java C. Enter.
Okay, great. Java C minus version. Enter. गुड, तो आपका जावा 19 प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, जेडीके एज वेल एज जेआरई सब कुछ है, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट फॉर दिस टू गेट कंप्लीट। फिनिश। नेक्स्ट फिनिश। ओके, नाउ ये मिनिमाइज करो, ये भी मिनिमाइज करो, मिनिमाइज। ओके, नाउ नेटबीन्स का कहीं तो ये आइकन आ चुका रहेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस नेटबीन्स, तो स्टार्टिंग नेटबीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मिनट, एक मिनट, आपके पास ऑलरेडी नेटबीन्स इंस्टॉल था क्या? एक बार किया था, वो अनइंस्टॉल किया था सर। नहीं ना, ऐसे आई डोंट वांट टू इंपोर्ट द ओल्डर वन। 13 का सेटिंग्स ऑलरेडी थे उसमें, अब 15 है। I'll show you where the 13 का installation was already there. वो uninstall नहीं हुआ है 13 वाला से। Here you go. His NetBeans 15 is currently installed. But NetBeans 15 में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। It's almost blank. तो हम गए फाइल में, कहता है अरे 16 is available. कहाँ available हो गया? तो click on this 16. अरे कब इंस्टॉल अवेलेबल हो गया? 30 नवंबर, अभी अभी 15 दिन पहले अवेलेबल हो गया। ओके, तो अभी 15 पे ही काम चला लेते हैं हम लोग। आई विल इंस्टॉल 16 ऑन माय मशीन। Close all windows, close tabs. Here you go. तो भी अरे अरे क्लोज कर, क्लोज। here you go. So go to file and we want to create a new project. तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, तो आई शुड हैव सपोर्ट फॉर सम लैंग्वेजेस। ये कहता है C++ का सपोर्ट है, बट कहता है लाइट वेट C++ प्रोजेक्ट। जावा विद एंट है, तो ये कहता है जावा एप्लीकेशन। तो लेट्स ट्राई एंड क्रिएट जावा एप्लीकेशन। तो कहता है यार फाइंडिंग फीचर्स इज टेकिंग सम टाइम, यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद जावा। Okay, let's see whether it finds those features or not. And I doubt whether it will find those features. Hold on. अच्छा, एक्टिवेट कर रहा है वो जावा। इट्स एक्टिवेटिंग जावा इसी, दैट्स ग्रेट। It's for the first time, so it will take some time. If it cannot activate, there is other way we can activate. देखो मेनू भी चेंज हो रहा है, हो गया। तो क्या प्रोजेक्ट कहाँ रखना है? तो probably he has decided to keep his Java projects in some folder. Don't keep it on C drive. So let's say on some other location he's going to keep the folders, Yes. softwares. कौन Yes. से ड्राइव पे रखना चाहोगे? Yes, 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 yes. H पे प्रोग्राम्स रखना चाहेंगे, तो let me go to H drive. And here he says creates a new folder saying Java project. So that's the location where he plans to keep the files, H:Java projects. Name of the file is suppose first, and main class कौन सा है? Say in.impetus its dot main app. Finish.
There you go. So it has now installed Java, and we could just test whether it has correctly installed. So I say system.out.println, welcome to Java, and let's launch this program and see whether it has correctly got installed. Welcome to Java. Output has correctly got printed. So it's great. Java has correctly got installed. Now we'd like to activate C++ and see whether we have an access to C++ as well. We go to Tools, Options, and we have C++. It's activating C++. जैसे हमने Java activate किया था initially वैसे C++. So it looks like C++ has got activated. कहता है यार मगर compiler कहाँ है? So NetBeans is not providing you a compiler. Neither Java compiler, nothing. Java he had already installed, so Java compiler is found. So it is now failed to find any Java compiler. यहाँ कुछ Java C++ compilers. So it says, oh, I don't find any of these configuration files. So please put path to CLS or language protocol server. ये मुझे मिल नहीं रहा है. तो Java ये कैसे use करूँ मैं? Correct. So now there is where need will arise for us to have activate C++. So let's see, does Apache 13, Apache 16. When it does Apache 16 support so and so? So it does have a support, although Apache 16 है, it does have a support for C++ project. ये कौन सा Apache का quick start है, कब का है? They have not specified the version. ये 7.2 की बात कर रहे हैं. Currently we are working in version number 16. So I want support for this thing also to be made available. 15 के लिए भी हमें चाहिए. Now for that, what will we have to do? We'll have to from somewhere. ये कहाँ गया Apache? I was doing it on my machine. आप लोगों को दिखाई दिया क्या मैंने क्या किया? हाँ? नहीं आप तो क्या सो रहे क्या? मैंने गलती से मेरे ब्राउजर पे क्लिक किया था. I should have clicked on his browser. Okay, ऐसा नहीं करना है. तो here I go. I say NetBeans 16 support for C++. So if I go for NetBeans 16 support for C++, it's taking us to a tutorial. This tutorial, even if you go, it is telling you, oh, ये कैसे करना है 16 में या 15 में C++ कैसे handle करना है. All those things have been given. Adding unit test, यानी it has a support, C++, how to code assist, सब कुछ है. But the point is, compiler जब तक नहीं है, all these things are of no use. So we'll have to first make sure that we supply a compiler. Till the time we don't have a compiler, none of these things are going to work. तो ये beginning with JNI NetBeans for C++ and Windows देखते हैं. तो NetBeans ID हमने लिया 7.8 with NetBeans plugin. अरे अपना 7.4 8.0 नहीं है. What we have right now is 15. तो हमारे पास ये plugin वगैरह कहाँ से आएगा? So we need from somewhere a link that will enable us to access or activate C++ support under this. So for that, what I'm going to do is I go for check for updates. It will tell me what all things you can update. Okay, your ID is up to date. Great. Then I go to help, tools, tools. I go to plugins, correct? And in plugins, I have all the plugins which are there. तो अवेलेबल प्लगइन्स में जाके देखते हैं, डू वी हैव अ प्लगइन फॉर C++? जरा चेक करो इसमें C++ का प्लगइन है क्या. हमें गिटहब का सपोर्ट चाहिए तो मैं उसको क्लिक करता हूँ. ये सारे प्लगइन्स हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं. कलर द कोड प्रीव्यू ये भी एक्टिवेट कर लेते. दैट्स नाइस. सी वेदर वी हैव सपोर्ट फॉर C++ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बताइए. आई एम गोना स्लोली स्क्रॉल, एक एक करके स्क्रॉल करते हैं. आप मुझे बताइए इफ एनीवेयर यू फाइंड C++. ओके, जावा एफएक्स चाहिए, वी नीड दिस.
आपको PHP सर्वर चाहिए तो ये ले लो Zen वगैरह, पर हम लोग फिर अभी PHP पे काम नहीं कर रहे थे. I'm just not taking it. नहीं है. हेलो, Yes please. ये लेक्चर में तो हमने ये 2-4 जो है वो बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दिए. तो लेट देम गेट इंस्टॉल इन बैकग्राउंड. डाउनलोड कर रहा है ये प्लगइन. Meanwhile, we will again go back over here, tools, plugins. Some plugins are currently being installed in background. Available plugins देखा हमने. Downloaded कोई है क्या? Already installed कौन से है? तो ये है. Out of which जो activated नहीं है will activate. HTML5 will activate. Java FX2 activate कर लेते हैं. Web activate कर लेते हैं. C++ is already activated, it says. Okay. Base ID is also to be activated. Service registry is also to be activated. FX2 is also to be activated. Tools are also to be activated. Java SE तो already activated ही है. Okay. तो इसे continue and let it activate all of that. सिर्फ developing NetBeans नहीं चाहिए, Groovy नहीं चाहिए for a moment. तो ऐसे activate. It will activate all of them. Keep it ready. So at least for Java goes, this machine is ready for Java. Now only problem is regarding C++. So while it is being activated, what I'll do is I'll find NetBeans plugin for C++. I'm going to say NetBeans 8 plugin for C++. I just want the link. ये एक्टिवेट हुआ क्या? तब तक देखते हैं. ये एक्टिवेट हो गए सारे. तो इफ वी कैन गो टू सेटिंग्स, 8.2 का पोर्टल है, उसको क्लिक कर लेते हैं. ओके, ये कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं. यहाँ है NetBeans 8.2 plugin portals. So if I take this 8.2 plugin portal, then the number of plugins that will be available will be increasing. तो यहाँ देखते हैं अभी C++ आ चुका है क्या, या इसे अपडेट भी करने के लिए कहते हैं. इंस्टॉल्ड हो गया. ये जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. ये CLS CCLS ये नहीं चाहिए हमें. So what I'll do is I'll remove this. डीएक्टिवेट करता हूँ ये जो बाय डिफॉल्ट आ चुका है. ऐसे ऐसे छोड़ देते शायद. तो अपडेट कहीं दिखाई दे रहा है. अपडेट्स, ऐसे चेक फॉर अपडेट्स. Currently we had 50 plugins which are there, correct? So now let's update. While updating, I expect this to get increase. अभी increase हो गया, 60 हो गया. क्यों increase हो गया? Because in settings, I also ask it to search for 8.2K plugins. So number of updates have increased. अब देखते हैं कहीं C++ आ रहा है क्या additionally. Just check it out quickly. कहीं ये here we go. तो आ गया C++ का support. Now we have this C++ support under this. So let's install this particular plugin. It's installing C++ support. Next, install. Let it take its own sweet time to complete installation. कैसे किया मैंने? I'll explain once again. I went to tools, I went to plugins, and I knew 8.2 में support था. So I said 8.2 plugin portal. I selected it. Last time we had 60 plugins, 50 plugins. अभी 60 हो गए. कैसे? मैं updates में गया and I asked to check for updates. So it checked for the updated plugins, and whatever updated plugins it has found, those will now get installed. Moment this C++ plugin gets installed, we'll restart the ID. So our ID is ready now. What it just wants is a compiler.
Now, this lookout is looking out for either Cygwin or Cygwin compiler is what is looking out for. So we have to supply the Cygwin or Cygwin compiler to NetBeans. So let's install Cygwin compiler now. C++. Cygwin can supply you Windows, Java, Python, all the languages. But currently we are interested only in C++. Okay, let's restart. So, bolo. Update in progress. So it's updating, unpacking everything. Whatever plugins that we have currently installed. Okay, well, this may take some time. Since he has already a browser, Chrome का है इनका या जो भी रहेगा, यहाँ से 16 भी डाउनलोड करके रखते हैं. So it's being downloaded. Hopefully this is done. Launching, it means. Here you go. Already. Tools में गए. Have patience. थोड़ा सा time ले रहा है वो. ये background projects open कर रहा है. It will take some time. हो गया. Now let's go to tools. Let's go to plugins once again. And once we are in plugins, let's go to install plugins. Let's deactivate this one. ये जो पहला वाला था ना वो deactivate कर लेते हैं. वो CCLS वाला. We don't want that. Okay. Now, while this is taking some time, let's jump to Cygwin installation, and then we'll configure NetBeans with Cygwin.
The Cygwin is also going to take some time. Let's jump to Cygwin. Yes. तो यहाँ C software collection में he has kept somewhere Cygwin. यहाँ इसने Cygwin रखा हुआ है. And here's a setup file that is there. Text document है. And here's Cygwin 64. So I'll click on this particular file. And Akash's screen has gone back. Okay. Let's see. NetBeans भी ready हो गया क्या? एक बार देख लेते हैं. सर नेटबीन्स 13 मध्ये चालेल नाही सगळं आधीच्या जावाच्या आपलं हे बघू पहिले ते जावाचं C++ काय झालंय. ऑप्शन्स C++. ये वापस CCL जैसे देख रहा है. ओके. I'll close this. Tools. Tools. I go to tools. I go to plugins. C++ plugin दोबारा सिलेक्ट कर लिया हमने. इंस्टॉल कर लिया. Next. I accept. I accept. I accept. And I say install. ये मुझे लाइट वेट सपोर्ट वाला नहीं चाहिए. CPP लाइट नहीं चाहिए मुझे. I want the regular C++. So let's see. Meanwhile, यहाँ चलते हैं नेटबीन्स में. Cygwin. So let's click on next. जरा इस पे ध्यान दो हम लोग क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं. How much space do you have on C drive? Enough space है? Enough space. Okay. So I say next. ये जरा Cygwin का मिनिमाइज करो. हो नहीं रहा है मुझसे. हो गया. एक मिनट. I say next. This is your Cygwin under Windows. Yeah, Linux under Windows. It will give Linux-like behavior under Windows. The next पे click करो संजय. Okay. Now you have an option of install from internet, download without installing, and install from local directory. Since I have already given it to him in local directory, select install from local directory. Third option. Okay. Next. Next. Let the path be the basic path. Next. And all user and next. All user. And wherever you have kept it on your machine, ये जो है ना आपने मैंने download करके दिया था आपको. If you don't have the software, you could have used option like install from internet. Since I have already given the software, you don't have to download it from internet again.
तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द पाथ। ये फोल्डर पे क्लिक करो संजय, नीचे इस पे टास्क बार के नीचे फोल्डर का आइकन है ना, वहां क्लिक करो। नीचे, यहाँ नहीं यार, नीचे 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 टास्क बार पे जूम, टास्क बार नीचे, टास्क बार सबसे नीचे जो बार है आपका, हाँ उस पे फोल्डर पे क्लिक करो। फोल्डर बाजू वाला गूगल। नीचे, टास्क बार नीचे सबसे नीचे, हाँ फोल्डर नीचे, हाँ क्लिक करो। हाँ। सो दिस इज द लोकेशन, यहाँ एड्रेस बार में क्लिक करो। दिस इज द लोकेशन वेयर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस डाउनलोडेड वर्जन। ये जो है दिया है 253 MB का, इसमें ऑलरेडी है, तो आपको वापस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंस आई ऑलरेडी गिवन द सेम पाथ हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, तो कहिए नेक्स्ट। तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, डाउनलोड में उसे एक्सेस करना शुरू करेगा। एंड होपफुली हमें जो चाहिए वो पैकेज में यहाँ मिल जाए, नहीं मिले तो आई विल शो यू हाउ टू डाउनलोड इट। तो here we have all the packages, all the categories. Click on all, click on all पे। ओके यहाँ नीचे जाइए, ऑल के बाद डेवलपमेंट में DEVE, हाँ 21 है, क्लिक करो DEVE पे। होल्ड ऑन, मेरे पास होल्ड ऑन, मुझे देखने दो हो रहा है क्या मुझसे। पहले मैक्सिमाइज करो पूरा Cygwin सेटअप। ओके होल्ड ऑन, ये आपसे हुआ या मुझसे हुआ? मैंने किया मैसेज। आपका माउस छोड़ो 1 मिनट। हाँ निकाल दिया माउस में। चलो आप ही करो, DV पे क्लिक करो, स्क्रॉल अप स्लाइटली, डी स्क्रॉल करो आप थोड़ा। हाँ, नाउ इनसाइड दिस मुझे क्या क्या चाहिए, मैं इस पे एक क्लिक करना शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्लिक करो, एटो कॉन्ट। हाँ वो स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करो। नहीं सॉरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, उसका जो ट्रायंगल है हाँ, उसमें 15-1 जो है ना उस पर क्लिक करो। नेक्स्ट एटो काउंट 2.7 पे भी क्लिक करो, हाँ क्लिक करो। देन एटो मेक पे भी क्लिक करो, हाँ। देन बिन यूटिलिटीज पे क्लिक करो, CGD पे भी क्लिक करो। देन डायरेक्टली नीचे GCC 32 GCC कोर पे क्लिक करो, GCC 32 कोर। GCC कोर। अब GCC G++ पे क्लिक करो। कोर लाइक सब में कॉमन जो है FOR या फोर्ट्रान के लिए, अभी फोर्ट्रान नहीं चाहिए हमें। और नीचे नीचे GCC मेक पे क्लिक करो, GCC 2 GCC मेक। हाँ ओके। GDB पे क्लिक करो, और लिब वाले सारे क्लिक करो, LIB। हो गया। और ऊपर क्लिक करो एक बार, स्क्रॉल अप, एडमिन पे जाइए, होल्ड ऑन डिफॉल्ट रखिएगा। बेस पे जाइए, होल्ड ऑन, मैन DB पे क्लिक करो, मैन DB, मैन मतलब हेल्प चाहिए हमें, मैन ओके। DB उसमें, मिंट मैन डेबी। मैन DB हाँ ले लो। हाँ मिन TY तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके करो नेक्स्ट, करो नेक्स्ट। नेक्स्ट गुडा। नीचे सबसे हो गया ना अभी, नेक्स्ट 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 करने दो सब काम, एंड देन विल चेक अपना
सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या? मीनवाइल नेटबीन स्टार्ट कर लेते हैं. अरे यार इसको क्या हुआ? एरर. This affected package failed to locate properly. मीन टी नहीं मिला उसे, प्रॉब्लम आ जाएगा फिर अभी. नेक्स्ट. बैक. मीन टी नहीं मिला तो नहीं होता है. गो बैक. बैक. मीन टी चाहिए था हमें. बैक. Okay. हाँ अभी लो इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट. नेक्स्ट. 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 No longer side list. ओके 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 ओके. मैं आपको यूआरएल देता हूँ. होल्ड ऑन. एक भी लिस्ट नहीं. अवेलेबल डाउनलोड साइट्स. बैक करो. बैक. नेक्स्ट. नेक्स्ट. मैं चैट विंडो में आपको लिंक देता हूँ, वो डाल दूंगा. Okay, sir. कौन सा कंट्री नजदीक अपने लिए? चाइना, हांगकांग, इजराइल, कौन सा है? China. वायरस देगा आपको. करो ब्राउजर पे, ब्राउजर ओपन करो. तो गूगल में डालो. google.com. और टाइप करो मिरर. टाइप करो मिरर Mirror. साइट लिस्ट. और सिग्विन करो सिलेक्ट. क्लिक करो. हो रहा है मुझसे हो रहा है. छोड़ो. तो we have so many sites which are there from where we can download it. हमें FTP साइट चाहिए. अरे अभी डाउन ये अभी नहीं हो रहा है मुझसे एक्सेस. करो स्क्रॉल डाउन. ओके. Scroll हो रहा है हो रहा है क्या? मुझसे हो रहा है, आप कर रहे हो? आपसे. Okay. So these are various sites from where we can probably download. So what I'll do is I'll take some Hong Kong का site and see whether that site is working for us. तो ये एक साइट है. तो अपने सिग्विन में एक साइट वो ऐड कर लेते हैं. ऐड यूआरएल. ये सिग्विन में डालो. क्लिक करो नीचे ऐड. यहाँ हाँ ऐड पे क्लिक करो. होल्ड ऑन होल्ड ऑन. और वापस सिग्विन मिरर साइट पे क्लिक करो. वेब पेज पे. हाँ. हाँ आप कोई एफटीपी साइट ले लो. बेलारूस नहीं चाहिए, फ्रांस नहीं चाहिए, जर्मनी की एफटीपी साइट, हंगरी, ग्रीस, मोल्डोवा, यूरोप नहीं चाहिए. एफटीपी एफटीपी कोरिया वाली साइट सेलेक्ट करो. ये या हो रहा है मुझसे. रुको बोलो ftp डॉट. आप करो ftp डॉट कैसेट डॉट एसी डॉट के आर. वो करो साइट सेलेक्ट. हाँ सिलेक्ट करो. कॉपी डालो वहाँ. ऐड. चलो नेक्स्ट बोलो. Okay, बोलो. ओके बोलो. ओके बोलो. कह रहा है दोनों से उसको सेटअप नहीं मिल रहा है. ओके कैंसिल करो. Cancel. कैंसिल. यस. अब पीछे जाइए. ऊपर स्क्रॉल करो इसे. होल्ड ऑन.
इसका लेटेस्ट ये डाउनलोड लेते हैं, सेटअप लेते हैं, लेटेस्ट 64 बिट, ये लेटेस्ट सेटअप ले गया एंड इसे रन कर लेते हैं लेटेस्ट सेटअप लेके। दो बार इधर नहीं रे, करो नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो साइट अभी बहुत सारे। ओके, अब इसमें से मुझे कौन सा साइट चाहिए बताता हूँ। गो बैक टू योर फोल्डर्स, नीचे फोल्डर्स में जाइएगा। अरे नहीं नहीं यार, मशीन पे जहाँ सिग्विन ऑलरेडी रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो कौन सा साइट है? FTP IJJAD ओके, क्लिक करो। नीचे जाइए नेटबिंस में। हाँ, FTP IJJ करो, स्क्रॉल करते रहो। अरे इतने फास्ट करोगे, मैं मशीन हूँ क्या? FTP स्क्रॉल करो, हाँ कर दे रहो। वापस ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये देखो नीचे से तीसरा वाला है ना, FTP IJJAD.jp। ये हाँ, करो क्लिक, नेक्स्ट। अरे यार, वैसे भी नया है आगे, छोड़ो। तो ऊपर पेंडिंग पे क्लिक करो की जगह ऑल क्लिक करो। होल्ड ऑन, एक नया फीचर आ रहा है, रुको। पेंडिंग पे नीचे सिग्विन है। एंडिंग पे सिग्विन है। उसके बॉक्स में क्लिक करो, होल्ड ऑन। 3.3, 3.5, 3.8, टेस्ट 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 नहीं, स्टेबल ही चाहिए। 3.4 ही है, सही है, ठीक है, 3.4 ही है। अब इट विल फाइंड एनीथिंग दैट वाज मिसिंग, जो भी मिसिंग था इसे शायद मिल जाएगा अभी। करो नेक्स्ट, देखते हैं अभी इसको किसी इसमें दिक्कत है क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो जो मिगविन नहीं मिला था उसे, नाउ प्रॉब्ली इट शुड फाइंड इट, वी शुड नॉट गेट एरर। वो इंटरनेट से ले है ना। हाँ, ये चल रहा है, तब तक नेट भी जरा स्टार्ट करो, ये मिनिमाइज करो। नेट भी स्टार्ट करो तब, मिनिमाइज करो, इसे मिनिमाइज करो, सिर्फ मिनिमाइज करो। हाँ, नेट भी स्टार्ट करो। Actually, I'm purchasing a new laptop now. So I'll be doing all the installations. So I have thought about कि जब अभी नए लैपटॉप में जब इंस्टॉलेशन शुरू करूंगा, तो I will record all the installations as well. And probably I'll have all the latest installations done. तो कुठला घ्यायला लागला? I have shortlisted two. One is एक तो ThinkPad है series, but I'm thinking about Dell and HP. I have shortlisted two. तो बघू तिघांपैकी एक घेईल आता. Otherwise I'll continue the same ThinkPad series that I've been using so long. आता धीरे
11 वर्ष थिंकपॅड वापरलाय. आता असं वाटतं की ते वेगळा ट्राय करावा. नाही. टूल्स होल्ड ऑन, हो रहा है मुझसे. होल्ड, छोड़ो छोड़ो. हा हे करा. होतंय का? नाही होते, करा. हा तुमच्याने झालंय ते. हो का? ओके. हा. टूल्स प्लगइन्स. तर ते नाही. ते cancel. कॅन्सल करा. आणि पहिलं होतं दुसरं हे आहे ना शेजारी. झालं रेडी. Now, how do you check whether this Cygwin has been correctly installed or not? Click on finish. Now, minimize करूया बाकी सब कुछ. नहीं तो इसे होने दो. चलो, run in background. ये background minimize करो, ये हो रहा है. Minimize हो गया. Now here you should have Cygwin का icon somewhere. आहे. या terminal. If this terminal opens correctly, then you have installed it. ये हो गया success. Very nice. First attempt में success है. यहाँ जाते GCC installed है क्या? GCC -- version. Unfortunately, GCC command not found. तो ये okay. G++ not found. चलो, लिनक्स का टर्मिनल तो आ गया है. यस, तो मैं कहता हूँ d:/ls-l. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है. बट इट इज फेल्ड टू फाइंड द कंपाइलर. तो एक बार वापस देखते हैं कंपाइलर की तरफ. ये वार्निंग cannot complete validation for the plugin. Choose unpack. Unpack.open. दो चीजें हम लोग एक साथ कर रहे हैं. ओके, तो लेट्स गो टू आवर गूगल डाउनलोड. ये आ गए. डाउनलोड्स में चलते हैं. डाउनलोड्स में डाउनलोड कहाँ है? कंट्रोल है. इसका सेटअप फाइल के सर हाँ, सेटअप फाइल जाता डाउनलोड झालेली. हे येत आहे डाउनलोड मध्ये. डाउनलोड्स. सेटअप. This was setup file. Now for some reason we could not see GCC. Yeah? तो now Cygwin तो हो गया install. GCC का नहीं हो गया install. So let's click on here once again. His machine is quite fast, so it will work quick. Shouldn't take much time. नेक्स्ट ना. Next. 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 ओके. नाउ पेंडिंग की जगह ऑल पे क्लिक करो.
फुल जाओ नीचे, नहीं कैटेगरी पे क्लिक करो, ऐसे नहीं फुल नहीं करते, कैटेगरी पे क्लिक करो, कैटेगरी ओके, ऑल पे क्लिक करो और इसमें डेवलपमेंट पे क्लिक करो, होल्ड ऑन, अरे आराम से, गाडी कोणतरी घ्यायला आलाय, तर तुझ्या गाडीमधून काही सामान काढायचंय का? त्यांना घेऊन जाऊ दे. जस्ट गिव मी अ सेकंड ना. Okay. Now scroll up slightly. Up. Admin development में start में, हाँ, hold on. Let me see. Auto build पे click करो. हाँ, select करो. Down arrow. हाँ, click करो 5.3. Auto config click करो. Latest, हाँ, latest 15.1. Then AutoCom 2.7 पे click करो. हाँ, latest. AutoMake पे click करो. AutoMake. Atomic, oh, And then directly AutoMake, नीचे जाओ, नहीं वो नहीं, नीचे लेटेस्ट वन. एक मिनट, होल्ड ऑन, लेटेस्ट कौन सा दिखता है? 1.9 नहीं, 1.16 1.6. 16, हाँ, यस और नीचे चलो देखते, होल्ड ऑन, आराम से बीन यूटिल्स पे क्लिक करो. और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो डेवलपमेंट ऑल क्लिक करो. हाँ, मैं अगर इफ यू कैन नॉट फाइंड दिस, B neutil. हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है, हमें क्या चाहिए? असेंबलर चाहिए एंड सिमिलर यूटिलिटी चाहिए. तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं राइट हैंड साइड को हमें क्या चाहिए. ओके, CGDB पे क्लिक करो. CGDB थोड़ी देर पहले हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे. ओके, एक है ना. नाउ लुक एट दिस, यह है ऑप्शन. हमारे पास C-lang का भी कंपाइलर है, हमारे पास GCC भी है. You can also use C-lang. C-lang happens to be one of the latest C compilers which is available, or C++ compiler, very lightweight. But since I have not used it very often, I am not going to use it right now because I am not aware of the settings. But it is said to be one of the latest, very lightweight compiler for C++. CMake पे क्लिक करो. CMake, CMake doc, CMake GUI. करो नीचे, डाउन स्क्रॉल आराम से. CPP-I भी कर सकते हैं जस्ट फॉर फन. अगर आपको CPP-I पे क्लिक करो, CPP-I. Okay, it's just a preprocessor in which is there, so you could just click on that. करो ना, सिलेक्ट करो. Yes. किया ना, किया. ओके, CPP यूनिट भी करो बिकॉज यूनिट टेस्टिंग भी अगर आपको करना है C++ में, दैट्स आल्सो पॉसिबल. ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग इन C++, हम जावा में कर रहे हैं, फिर भी कर सकते हैं C++ में. अब नीचे जाइए, देखो आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है आपको DJGCBP, ये भी आपको C++ देगा. हमें ये वाला नहीं चाहिए. नीचे चलो नीचे, ये ऊपर C++ कंपाइलर था. चलो नीचे स्क्रॉल करते जाओ, होल्ड ऑन. अब यहाँ आ गया GCC कोर, ये स्किप हो गया देखो, इसलिए उस पर सिलेक्ट करो. वही है लास्ट टाइम जो किया हुआ. फिर GCC++, फोर्ट्रैन नहीं चाहिए, आउटडेटेड लैंग्वेज है. हाँ, ओके. और नहीं, ऑब्जेक्ट सी नहीं चाहिए, वो तो अभी एप्पल के साथ खत्म हो गया. ऑब्जेक्टिव सी भी नहीं चाहिए. हाँ, टूल्स ले लो, Tools. चारों टूल्स ले लो.
Okay. जीसीसी टूल्स इपॉच जो है तीनों, इपॉच 1 2 2 सारे ले लो, इसके ऊपर के भी 3 ले लो। उसके ऊपर हाँ जीडीबी लो, जीडीबी। हाँ ये नीचे राइट साइड से वो पढ़िएगा अगर नहीं समझ में आता। जावा का डिबगर, पाइथन का हेलो हाँ डिबगर चाहिए हमें, तो जीडीबी ले लो। होल्ड ऑन, गिट चाहिए तो ले सकते हैं, बट अभी चलो नीचे। हेलो 1 मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। करो स्क्रॉल। 1 मिनट, इंडेंट ले लो, इंडेंट अच्छा है, यूटिलिटी है, कंपलसरी नहीं है, ले लो। इंडेंटेशन, प्रोग्राम का इंडेंटेशन करने के लिए फायदा होगा। करो स्क्रॉल। हाँ 1 मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये प्रिंट एस प्रिंट डेवलपमेंट ले लो। यस प्रिंट नहीं नहीं, लिब में ऊपर था। ये वाला होल्ड ऑन, करो स्क्रैन, स्क्रॉल नीचे। करते रहो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, करो। हाँ? 1 मिनट, 1 मिनट। एक नीचे है मेक, वो सिलेक्ट करो। मेक कंपलसरी है, कुछ ऑप्शनल थे बट मेक कंपलसरी है। मेक मतलब टू क्रिएट अ बिल्ड, EXE जो बनती है ना आपकी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके लिए। नीचे करते रहो। हाँ ना, मिगविन इज ऑल्सो वन दैट यू कुड हैव यूज्ड। अगर जिस सिगविन की जगह मिगविन भी काम करेगा। अभी एक ही चाहिए हमें, तो मिगविन नहीं लेते हम लोग। करो करो स्क्रॉल, करो स्क्रॉल। नहीं चाहिए, मिगविन में से कुछ नहीं चाहिए। जाओ नीचे, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। करते रहो स्क्रॉल, करते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो ना, देयर इज टू मच ऑफ थिंग दैट इज देयर। ऊपर सर्च में सिर्फ जीसीसी टाइप करो, सर्च में। होल्ड ऑन, अब जीसीसी में जो चाहिए उसमें से कुछ स्किप्ड है क्या? लेट मी चेक। लिब पे क्लिक करो, लिब्स, नीचे से तीसरा, उसके नीचे, सबसे नीचे। हाँ इस पे हाँ, 1 मिनट, ये तीनों सिलेक्ट करो। इसको इसको करो नेक्स्ट। लिप को एक की रख दो या 11.2 रख वो है ऑलरेडी, अच्छा ले लो, लेटेस्ट लो। करो नेक्स्ट, हो गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, कॉल कर ये जब तक चालू है मिनिमाइज करके रखो। हो रहा है ये भी मिनिमाइज करो, डाउनलोड्स। ये देखते तब तक नेटबीन्स में। मीटिंग चल रही है हाँ मीटिंग ये नहीं चाहिए हमें।
अपना जो सी था वो कहाँ गया? लेट अस ये सी। ये को डीएक्टिवेट किया है सर। डीएक्टिवेट किया तो भी दिखाई देना चाहिए ना। ये नहीं चाहिए था मुझे, लाइट वेट नहीं चाहिए था मुझे, लेटेस्ट चाहिए था। सेटिंग्स में गए जो हमने डाउनलोड किया था। लेट इट टेक इट्स ऑन टाइम। मीनवाइल हम लोग जरा इसके साथ खेलते हैं, नेटबीन्स के साथ। ये मिनिमाइज करो इंस्टॉलेशन सिगविन का। लास्ट टाइम 60 थे, अभी 59 आ गए। उसी C++ निकालने के बाद किया। करेक्ट। हमने गलती से जो चाहिए वो निकाला क्या? इट शुड कम बैक अगेन, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट डन। सिगविन को मिनिमाइज कर दो। इट्स डन, वो इंस्टॉल हो चुका है। यही चाहिए था मुझे। Earlier it was giving some different link, अभी यहाँ से ही आ रहा है installing tools general. Now if your compiler is installed, आ गया, उसने ले भी लिया C++ compiler, great.
यानी अपना इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये उसने सर्च कर लिया खुद। ओके, ये वही देखो, ये भी खत्म। ये करो क्लिक इस पे। फिनिश पे। नहीं, डेस्कटॉप और शॉर्टकट मेनू, देन फिनिश। पहले जाके जीसीसी हुआ है कि नहीं चेक करना है हमें। करो यार इस पे क्लिक। जीसीसी माइनस माइनस टाइप करो, जीसीसी माइनस माइनस वर्जन। हो गया। तो यह लेटेस्ट जीसी कंपाइलर वर्किंग, सी हो गया। अब सी प्लस प्लस के लिए टाइप करो जी प्लस प्लस माइनस माइनस वर्जन। हो गया, ग्रेट, रेडी आपका कंपाइलर। यू कुड कंपाइल फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। अब नेटबीन्स यहाँ से भी कोई भी फाइल कंपाइल कर सकते हैं। आपके पास कोई सी की फाइल है क्या? होल्ड ऑन, आई विल राइट वन। सिंपल सा कोड लिखते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, कुछ मत करो। ये आपकी फाइल है सपोज। ये अच्छी है। हो गया, यस सर। हो रहे आगे हो रहे। यस सर। आप अगर फाइल को कोई और नाम देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हो गया। सो ये कंपाइलर इज परफेक्टली इंस्टॉल्ड। ये बंद कर लेते हैं, ये भी बंद कर लेते हैं, ये भी बंद कर लेते हैं। अब चलते हैं सी सी प्लस प्लस में। लेट्स क्रिएट अ सी एप्लीकेशन नाउ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ सी सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट, सी सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। नेक्स्ट पण तुम्ही दिलेलं प्रोजेक्ट आहे का ऑलरेडी? आहे की त्यातलं आपण स्वतः बनवून होता। Here we go, H drive, C प्रोग्राम में गए, ओपन। आपके पहले प्रोजेक्ट का नाम है सपोज, इसको भी मैं फर्स्ट देता हूँ नाम, और फाइल का नाम है सपोज मैंने जो भी नाम देना चाहेंगे। फिनिश। अरे सी प्लस प्लस बना, यू कुड सेट सी एज वेल, तो मैंने गलती से सी प्लस प्लस लिख दिया। दैट्स ओके, सी सी प्लस विच लैंग्वेज यू वांट। So there is C++, your source file, impressitis.in, अरे ये जावा का था। ये C वाला है नीचे फर्स्ट, ये C का फर्स्ट फाइल, इसमें सोर्स फाइल, सोर्स फाइल में यहाँ मेन ऐप, ये पहले क्लोज कर दे जावा वाला। ये अभी CPP आ गया,
इसने CSTD इंक्लूड कर दिया है, हैश इंक्लूड, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, तो इसे हटा देते हैं। ऐसे हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड I string, and I scroll and I greet you. I say std out, welcome to fascinating world of C++. Yep, come here. Yep. Now let's run this code and see. ये कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो जाएगा भाई। यहाँ तक आगे मतलब सब कुछ हो रहा है। आ गया? Welcome to the fascinating world of C++. Yes, sir. Okay, if you want to see the output in the external terminal, you could say right button click, properties. You could say run, and a internal terminal की जगह you could just say external terminal. Let's try that out. Apply, okay, and let's run the code once again. चलो एक्सटर्नल टर्मिनल पे नहीं काम कर रहा है तो आप इंटरनल पे रखिएगा। राइट बटन क्लिक, प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल टर्मिनल स्टैंडर्ड आउटपुट लिख देता हूँ, अप्लाई, ओके, रन। Are you? Welcome. Yes, sir. Okay, so your compiler is installed correctly. So Pratibha and Rohit are the only other people who are left out. But I hope you understood how to configure the IDs and install. It takes time. Nothing is easy. Okay, but then if you go through it, you will be more confident as well. Is that okay? Pratiksha, Okay. Rohit, समझ में आ रहा है? Sir, now only for your project input करायचे ना direct. हाँ, directly import करो, operator open करायचे. That you could try and figure it out. Okay, so we'll stop here today. Thank you all for staying back. Take care. Love you all. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much. Okay.